Rimpoche Kundan, can you please tell us regarding this Matho Nagrang, why it is celebrated and what is the purpose? Of course, this Narang has been going on for many years. It's been followed by, I think, not just our monastery, but respected and followed by all over Ladakh community. So it's very important oracle for all of Ladakh. And Rimpoche, since this is the holy month in Ladakh, so what you would like to suggest people, and many devotees are doing gochak, which is prostration, and keeping fast, and doing lots of prayers also. So what will be your message to the viewers of our channel? First of all, I just wanted to say that among many among Buddhist communities in all of Himalayan region, I find that the Ladakh community is one of the most informed, especially regarding the Buddhist philosophy. So I'm very happy because I was told there are many scholars and masters has been doing Buddhist introductions and Buddhist dialogues in Ladakh. So which is I always appreciate, and I'm very happy that Ladakh is in such an advanced place. And my only advice, I mean, not just during this special month, but generally to be more compassionate, because without compassion there is no Buddhist. Without compassion there is no practice of any kind of Buddhist. And for us, actually, Buddhism is more than because basically it's a way of life. It's how you live your life and how you can have a more meaningful life as a lay person working in an office or working in a shop or anywhere. I believe that through the Buddha's guidance, we have to remember that Buddha was a teacher. He was a guide. He was not, and he never said that you must do this and you must do that. He always guide us. That is that through our own understanding and belief, that we can make a better, meaningful life as a human body. Right? To have a meaningful life. If we want to follow Buddha's footsteps, then I think we will have a much better, and even not just spiritually, but also in a more worldly family life, in a community, society, we will have a much, which I believe through compassion. I think that's the main ingredient in our tradition of Buddhism. Rimpoche, the youths are very keen to understand the heritage, the Buddhist culture. So more or less they are more into practical knowledge of Buddhism. So previously, if you see, there are many other subjects where the things were taught in a different way. So if a youth want to know more about Buddhism practically, so how can they do it? How would they know about the Buddhism society, the prayer, the culture? How can they do it? I think, of course, culture plays an important role, but I think if you concentrate more, if you are a beginner, I would prefer them to more go with starting with a light philosophy instead of going cultural, because culture has its own how do you say baggage, or because not all the culture we do you can associate with the religion, because culture is basically a song, could be food, could be any sort, many of like our tea. It's sort of part of culture. It's nothing to do with the Buddhist, but it's culture. Like the kata we offer is not actually a Buddhist. It's a cultural thing, right? So those are, I mean, culturally. If you are Ladakhi, of course, this Ladakhi tradition we must follow. But as a Buddhist, I think more understanding of the Buddhist philosophy, I think that's the key. Generally, people go more on the faith side. People say, oh, touching the feet or going to the temple or doing some reciting mantra is considered more than understanding. So I always say that if you take a picture of the food, that doesn't mean that you will be satisfied. You have to eat the food to get more satisfied, right? To get strength. But basically, like, I mean, if you take a peja, any textbook, and place it on your head with full faith, suppose it gives you a blessing, it gives you a little bit of help. But the more important thing is when you open the peja, when you try to read it, when you try to understand the text,
I think that is more powerful than anything else. So I think my request is to read Buddhist, and of course there are within the Buddhism there are many Hinayana, Mahayana, Vajrayana, and then within the Tibetan the Buddhist which have Sakya, Nyingma, Kagyu, because there are many traditions, but we must also all remember that it's like I always say, it's like our fingers. The 4 traditions in Tibetan Buddhism is Sakya, Nyingma, Kagyu, Gilu. But if you how do you say, trace where the teachings are coming from, it will all come back to India, and it will all come back to the probably the Nalanda universities, the masters. So, and also if you even that if you go back more further, of course it goes back to the Buddha himself. So that we must remember. We must there is no big difference, slight maybe color of some things or some mantras or something, but the point of the Buddhist philosophy is same. And to be very easily, if I had to try to tell you the ideology of Buddhism, I believe is to try to understand oneself. Once you understand yourself, because at the moment we don't understand ourselves, we think we understand, we think we know our family, we think know our society, we think we know about anything that you kind of thing. But this is also important to understand that we vaguely know, we misunderstand between vaguely knowing and the understanding of the pure Buddhist philosophy. I think that's important. Also, by knowing oneself is like the key. By understanding the Buddhist philosophy, it basically means by understanding ourselves. Once you understand yourself, then you understand the whole universe. If you try to understand every universe, then there are so many things, it's too difficult. But when you understand yourself, then you understand the whole thing. So, which is like the key to all the universe. आज मुझे मौका मिला इस पुण्य दिवस पर आने के लिए, इस पुण्य स्थल पर आने के लिए और आप सब लोगों से मिलने की। यहाँ पर परम पूज्य, परम पावन हमारे सभी धर्मगुरु और हमारे एमपी साहब, सभी गणमान्य लोग, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं एक बात आप लोगों से पूरे भरोसे से बताना चाहता हूं कि मुझे यहां लद्दाख में आए हुए आज सिर्फ 15 दिन हुए हैं, लेकिन मैंने जिन लोगों से मुलाकात किया, मैं अभी तक 400 लोगों से अपने ऑफिस में मिल चुका हूं। एक फंक्शन भी मैंने पुण्यतिथि का, पुण्य दिवस का अटेंड किया, आज यहाँ पर आया। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं आप लोगों के बीच का ही हूँ। मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में रहूंगा। मैं आपके घर के एक मेंबर के तरीके से रहूंगा। और जब मैं 24 घंटे हमारे दिमाग में एक ही बात आएगी कि हम आपके साथ, आपके विकास के लिए और खास तौर से शिक्षा, स्वास्थ्य और सेफ्टी माने रक्षा, इन तीनों बातों को मैं कैसे कितना आगे बढ़ाऊं, मैं यही सोचता रहूंगा। रात में सोचूंगा, दिन में सोचूंगा, हर वक्त सोचूंगा, हर से बात करके सोचूंगा और पूरा प्रयास करूंगा। हमारा ये उद्देश्य है। अभी जब मैं आया तो मुझे यह पता लगा कि हमारे कुछ बच्चे, हमारे कुछ युवा, हमारी कुछ बेटियां चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो मैंने एयरफोर्स को कहा कि तुम हवाई जहाज निकालो। हम कोशिश हर दिन कर रहे हैं कि हवाई जहाज से हमारे जो लोग फंसे हुए हैं वो लेह आ जाए, कारगिल चले जाए अपने घर। काफी लोग आ गए, कुछ लोग और बाकी हैं।
जब तक सब नहीं आएंगे तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। ये हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे छोटे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, मैं ईश्वर करूंगा कि ये बाहर फंसे नहीं रहे, अपने मर्जी से आए, अपने मर्जी से आए तो सुविधाएं मैं यह करूंगा। दूसरा हमको एक चीज और बड़ी चौंकाने वाली पता लगी। हमको पता लगा कि दिल्ली से यहाँ जो किराया है वो 30,000 है, कितना 25,000 है, 40,000 है, और फ्लाइट 1 घंटे 10 मिनट की। तो मैंने बात किया है सिविल एविएशन मिनिस्टर से, वो यहाँ आने वाले थे, लेकिन उसके पहले मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये जो अन्याय है ना, यह हम अपने लोगों पर नहीं आने देंगे। किराया सब जगह बराबर होगा, किराया नीचे आए, कोई जरूरत, कोई ऐसा क्लास नहीं है कि ये अन्याय हमारे लोगों पर है, तो वो किराया नीचे आएगा, हम करेंगे। बाकी जो कई और बातें हैं, हॉस्पिटल कहीं पर वहां पर बिल्डिंग ठीक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हमारे कई लोगों को दूर दराज से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आना पड़ता है। ऐसी ऐसी समस्याएं लोगों को पता है। मैं सबके लिए क्रेडिट करूंगा। मेरा एम ये है, हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे लद्दाख में टोटल एमपी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसका एक्सप्रेशन इसका मीडिया, तो ये एक्सप्रेशन भी किया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसी जगह पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसी जगह पर ऐसे इतना भव्य कार्यक्रम होना, इतना भव्य ऐसा माहौल होना, इतना भव्य बिल्डिंग होना, आप लोगों का इतने ज्यादा लोगों का शामिल होना, ये एक ही चीज करता है, साबित करता है कि हमारे जितने भाई बहन हैं लद्दाख के, इन्हें भावना है, इन्हें भक्ति है, इन्हें भाईचारा है, और ये चीजें मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। और आप मानवता में सबसे आगे, इसलिए मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और बुद्ध भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको हमेशा सकुशल रखें, आपके विकास को आगे बढ़ाएं, और हमारे केंद्र से हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका हमको पर्सनल मैसेज है कि भाई लद्दाख में तुम जितना विकास कर सकते हो उतना करो, हमको मदद चाहिए तो पूछो। ऐसा हमारा दिल्ली का, मैं इसी उद्देश्य से आया हूँ, इसी उद्देश्य से आपके साथ, और इसी उद्देश्य से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शुभ घड़ी का, इस पुण्य दिवस का आप लोगों के बात बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद।